अभी हम लोग को लगने लगा कि हम भी भारत के ही नागरिक हैं। We have been witnessed such type of prime minister. We have some emotional connection. I feel like that. अगर कश्मीर में कुछ हुआ है, जम्मू कश्मीर में, दूसरे दिन नॉर्थ ईस्ट में होता है, पूर्वोत्तर में, और पूर्वोत्तर में होने के बाद तीसरे दिन फिर जम्मू कश्मीर में बम फोड़ेगा, लोग मरेगा। Peace and harmony, I can say that. নাচিতে নাচিতে কমলা সুন্দরী হালিয়া হালিয়া পরে রে, নাচিতে নাচিতে কমলা সুন্দরী হালিয়া হালিয়া The northeastern region of India, endowed with diverse cultures, landscapes and histories, grappled with the scourge of militancy, instability and underdevelopment for nearly 6 decades. However, against all odds, the region underwent a remarkable transformation in the last decade, transitioning from a hotbed of violence to a beacon of peace and development. Here, a transformational journey is taking place. This remarkable turnaround can be attributed to concerted efforts of a government driven by the vision of fostering peace, stability and prosperity in the region. Hello and namaste, I am Richa Dwivedi. Welcome to yet another NIJ documentary where we will look at the Northeast's journey from conflict to concord, from violence to peace and what made it all possible. In the last 10 years, the government signed 11 agreements and peace accords with various groups to resolve conflict. Bodo Accord, Bruriang Agreement, National Liberation Front of Tripura Agreement, Karbi Anglong Agreement, Assam Meghalaya Interstate Boundary Agreement, Adivasi Peace Accord, Assam Arunachal Border Agreement, Dimasa National Liberation Army Agreement, Agreement with United National Liberation Front, Agreement with United Liberation Front of Assam, Tripura Mota Agreement. To truly understand the significance of these agreements, we must grasp the historical context. Ethnic violence, abductions, and demands for separate states had marred the landscape of the Northeast since the late 1980s. The Modi government's commitment to resolving these issues has been instrumental in turning what was once known as a disturbed area into an aspirational one. Our story begins in Tripura. About 100 kilometers from the state's capital Agartala, we head to Dhumachara, where we seek to meet NLFT returnees who have given up their armed struggle for a brighter future. In the dense jungles of Tripura, the National Liberation Front of Tripura or NLFT had sown the seeds of violence since its formation in 1989. After years of negotiations, an agreement was signed in August 2019 with the NLFT SD faction, leading to the surrender of 88 cadres and 44 weapons. We arrive in Hokutpisa, where we meet a former NLFT member. He's now leading a normal life with his family. बस क्या ऐसा था माने जो आपने डिसाइड आं और तंगय जे आं और प्राय 2001 नि सिमां प्राय 15 बोसोर टंखार आनी गेरला लाइफ आं उलो जे वान सका
ani boyas prai 30 aboin thangka ojora go ang wansoka je ang irotongoi ani mane future ni bagoi mane kuno ang nukhunliya engkang obon bagang wansoka je anbu kaisa future tongo mane kaijagoi merit terir khai tongnan phung anbu kaisa future tongo ang je khaiman khaika dofani bagai jatin bai samung khaika ang tak sababik jibono phaioi ang no gam kuringke tai chai tongchina hine ang wansoka free phaika Do you feel hopeful? অবশ্যই মোদি সরকার অবশ্যই করেগা মোদি সরকার কোন কারণ আমরা ইতিহাস জানে অনেক ইতিহাস আছে কোনো গভর্নমেন্ট মানে যারা রিটার্নির বা কেরালার সাথে কেউ এগ্রিমেন্ট করে না শুধু মোদি সরকার বিজেপি সরকার তারা এগ্রিমেন্ট অতুল বিহারী বাজপেয়ী সময় কিতা সময় তারা সময় সব এগ্রিমেন্ট কিন্তু যেমন কংগ্রেস হোক কিতা সরকার তারা সময় কোনো এগ্রিমেন্ট করে এইবার অবশ্যই হবে प्रवीण मोहन त्रिपुरा अच्छा आप कौन से फैक्शन से एसडी ग्रुप SD ग्रुप तो आप वहाँ पे कितने साल थे 17 साल 17 साल क्या क्या কিন্তু ধরেন আমরা ডিউটি করছিল মানে ল্যান্ডে আর কি আমরা দেশে আইয়া আমরা কোনো ত্রিপুরাতে আইয়া মানে ডিউটি করছিল ডিউটির সময় গ্রুপ কমান্ডার যা অর্ডার দেয় তাই আমরা করে আর কি ডিউটির সময় তো মানে কালেকশন নেয় আর কালেকশন তো জনসাধারণের কাছে মানে কালেকশন নেই আবার ধরে যদি কোনো সময় গোলাগুলি মানে ফাইটার আর কি এরকম হয়ে যায় সিআরপিএফ বা টিএসআর যে কোনো ফৌজির সাথে আর কি না খুব মানে ধরেন কেন্দ্র সরকার সাথে চুক্তি করছিল খুব ভালো করছে আমরা যা চাইছি তাই পাইছি আর কি এরকম ধন্যবাদ আর কি কেন্দ্র সরকারে আমি ধন্যবাদ জানাই আগে কারণ যারা সন্ত্রাস বা যারা কেরালা আর কি তারা সবাইকে মানে তারা আমন্ত্রণ জানাইছিল মানে আবার জন্য আর কি এখন যে আইসে চুক্তি করে তারা সব দিয়ে দিছিল আমরাও পাইছি আর বর্তমানে যারা আছে তারাও আমি অনুরোধ করে আয়ও আত্মসমর্পণ করো তারপর যা পাওয়ার লাও আর কি এরকম আর কি কেন্দ্র সরকার আপাতত মানে ভালো কাজ করে আর কি अभी आप क्या करते हो अभी तो टमटम चला है इसीलिए तो आ रहा है ना यहाँ पे वापस आ गया इसीलिए तो भविष्य बनाने चाहता है इसीलिए तो आ रहा है इसलिए वो मैंने शांति से होना चाहिए इसीलिए तो आ रहा है वहाँ पे तो कुछ नहीं मिला इसलिए परेशान होता है इसीलिए तो यहाँ पे उत्तर शांति के लिए आ रहा है Can you tell us a little bit about your journey? When were you a part of the NLFT? What were your days like? And overall, what exactly was the youth, the people, the cadre thinking back then? Yeah, actually, 2002, I joined NLFT-NB and I stayed Bangladesh, the part of Molawi. There is near Molawi, Bangladesh. There is a Khasi village. We stay there. There is sub center of our like a headquarter of self-styled NLFT-NB group. I was the chief priest and finance minister self-style. We are distributed some beneficiaries like piggery, gottery, rubber plantations, and other something like that, and some like dropout coaching center and some additional classrooms all over the Tripura. So now, do you think that when the government is approaching not just NLFT, not just the Tripura-based militant organizations, but all across the Northeast, there are plenty of such organizations who are either who have suspended their operations, or they have entered into agreements for long-term peace in the region. Do you think the government is going in the right direction by persuading the people to join mainstream for peace? Because in the long term, stability is expected for growth, right? So do you think they are doing it right, the central government? They are doing right thing. So this is a positive. The central governments are taking good initiative. I appreciate
Even I like Indian Constitution. Do you see an improvement in the last couple of years, like 7 to 8 years, in comparison to before, when there was, say, the region was very volatile? Before we look back after or before 8 years or 10 years back, yeah, we afraid to go some cities and some places, even people afraid to go, and in village also. But if you compare, yeah, really, this is the changing. What have to do more, I think, yeah. People and government, central government, state government, and political leaders and social worker have to combine, like what to say, like a woman using the clip here. So people have to love each other. It should not be what to say, plan people or heal people's. The differences between the difference, yeah. So if they love each other, then it will be success. Otherwise, it will be back. We are right now located in Hokutwisa, which is in Dhalai district of Tripura. Over a period of time, the central government has handed out various socio-economic development packages for the returnees who have shunned violence and who have returned to the mainstream. Now we are in front of the Borok International School, which is from standard nursery to standard 8th, which has been constructed with the 100 crore package that was given to the NLFT returnees. The Borok International School has been constructed with the Special Economic Development Package given to the returnees. The building was inaugurated on 13th August 2022. Children from all over the village, as well as some from even more remote areas, come here to study, to build a future that is full of hope and opportunities. Coming back, normal life, we got some package and we started, and with that we started this to work among the society. We are distributed some beneficiaries like piggery, goattery, rubber plantations, and other something like that, and some like dropout coaching center and some additional classrooms all over the Tripura. That way, people are getting encouraged through the education. People may get some proper way the education. So this is right. We visited yet another residential school run by a former NLFT member. He recounts his journey to the mainstream and the changing mindsets steered by peace and development efforts in the region. People who gave up arms have returned to the mainstream. Right now, we are with two more such persons who have joined the mainstream. So let us hear their story from them. What is your name? My name is Ubuzai Uncle. And आपका नाम? बीबीसन त्रिपुरा. आप लोग कौन से फैक्शन में थे? हम लोग एनबी में थे. हम लोग का देश को बचाना है. हम लोग जैसे कि पढ़ा हुआ जो काश है, जैसे कि कुछ नौकरी वगैरह कुछ भी हो, जैसे भी कुछ नौकरी तो छोड़ दिए, जैसे कि ऑटो वगैरह भी नहीं चला सकता. जैसे कि त्रिपुरा में ऐसे हाल है. जैसे कि बाहर के लोग, जैसे कि हम नहीं बोलते बंगाली लोग ये करता है, लेकिन बांग्लादेशी जैसे आके इतना बढ़ चुका है कि हम लोग का रहने के लायक नहीं रहा. इस वजह से हथियार उठाना पड़ा. इस वजह से हम नौकरी कर सकता था, लेकिन हम नौकरी नहीं किया, क्योंकि हम सोच रहे कि हम नौकरी करेगा तो ये मेरा ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगा. मैं किसी को थोड़ा मोटिवेशन करके स्कूल खुल के किसी को, जैसे कि बहुत सारा स्कूल है, जैसे कि हम लोग का नवोदय स्कूल है 5 to 6. हम अगर 5 में एजुकेशन दे सकते हैं, 6 में परीक्षा दे सकते हैं, वो लोग 12 तक फ्री होता है. इस वजह से हम सोचा कि हम लोग का, जैसे कि यहाँ पर तो इंग्लिश मीडियम नहीं था, तो यहाँ पर तो हम लोग का सिर्फ बंगला मीडियम है. जो बंगला मीडियम पढ़ता है, जहाँ जो टेस्ट देता है,
वो परीक्षा पास नहीं हो पाता। तो क्या हम सोचा कि हम जहाँ पर क्लास 5 तक हम पढ़ाएगा तो हम एजुकेशन में हम इसको यहाँ पर टेस्ट दिलाएगा। उससे कि दे के भी पास भी हर साल में हम 5, 6, 6, 7, 8 ऐसे परीक्षा पास करके नवोदय में एकलव्य में दे रहा है। लेकिन वो गलत दिशा में नहीं जा रहा है। अभी जो यंगस्टर है, लेकिन मेरे बेटे भी हो, जैसे भी हो, ये सोच नहीं है अभी हमको कलेक्टर बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, ये सोच है। With this, we wind up for the day and begin our journey to the next stop, where we hope to meet Bruriang people who have found peace after a 2-decade-long struggle. Another chapter in the western part of Mizoram, where ethnic violence in 1997 led to the migration of Bruriang families to North Tripura. Fast forward to January 16, 2020, and a landmark agreement is reached, resolving the 23-year-old Bruriang crisis. We are right now in Anand Bazar and we are heading towards Khasampada, which is located at a border region. It is close to the Bangladesh border, and this is an area where a number of Bruriang families have settled after the agreement in 2019. So let us go and see the situation that they are in and what all has happened in this area. Kasnambara, located in North Tripura, is now home to over 1,000 Bruriang families. This is the largest settlement area out of the 12, where such families have begun a new life after spending years in displacement camps spread across the state. With me, I have Mr. Vipin Kumar Riang, who is the president of BTDS, which is the Bru Tribal Development Society, and he is also overlooking the whole settlement plans and development in the Khasampada area. So let us have a word with him regarding this whole process. हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि सेटलमेंट से पहले जो अपना लाइफ कैसा था वो सभी को मालूम है, क्योंकि 1997 मिज़ोरम से डिस्प्लेस होने के बाद अराउंड 24 इयर्स अपने टेम्पररी कैंप में विदाउट एनी बेसिक फैसिलिटीज़ हम लोग रहे। एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं था, मेडिकल हेल्थ केयर का कोई सिस्टम नहीं था, मतलब हर सुविधाओं से हम लोग वंचित थे। अभी सेटलमेंट के बाद इम्प्रूवमेंट ये हुआ है, पहली बात कि हम लोग अब गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, और अभी त्रिपुरा में परमानेंट सेटलमेंट हम लोगों को मिल रहा है। अब हम लोगों को वोटर आई कार्ड मिलना शुरू हो गया है, और PRTC परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट त्रिपुरा का हम लोगों को मिलना शुरू हो गया, और साथ ही साथ बाकी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो एक स्मार्ट कार्ड वो भी हम लोग को मिलना शुरू हुआ है। तो इस तरह से पहले की लाइफ और अभी की लाइफ अगर हम कंपेयर करते हैं तो काफ़ी चेंज हो गया है। नाइसिं पारा तुम फुला कुम बो माइरं राव सासु बाव जारिया वो तेले मुहा माइ मारक्रोय रां रावबो खौबा मा साल खौबा मा राव रिया जावो अबन डाक्टर दा साब गाहाम क्रोय बेंते ना नानसिया उम फोसा उम खरस बाय साव मान केबो खेमाइ जाहा खेमेया केबो आनो खेमेया मा ब्रला थै फनो तो ने हा स्कूल फनो क्रोय तै राव फरिया या तै फ खौ न नाय अब नौ हा को मैंने ये पहली आशापुरा में रहने का टाइम में उसमें हम लोग नरक ज़िंदगी में जी रहे हैं कि हमारा पास में घर ऐसा नहीं है जो
परंपरा हम लोग जो माँ बाप कैसा रहता है वैसे रहता है। हम लोग वहाँ पे करंट नहीं है और उसके बाद पानी नहीं है, हर तकलीफ है हम लोग वहाँ पे जो रह रहा की। और जो सरकार से दिया से हम लोग मिला कि 400 ग्राम राइस मिलते हैं सिर्फ वही से, और दिन में 5 रुपये मिलते हैं, वही से हम लोग खा रहे की। और यहाँ पे आके हम लोग सब कुछ मिला कि हमारा इधर बिजली है, पानी है, और इसमें ICDS सेंटर बना रहा है, और बहुत यहाँ पे मिला है कि यहाँ पे ये बिल्कुल ही जंगल एरिया था। सेटलमेंट के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यहाँ तक सड़क पहुँचा है, और सेटलमेंट के बाद एज पर एग्रीमेंट हर परिवार को 1.5 लाख रुपए और हर परिवार को 4 लाख फिक्स डिपॉजिट के तहत वो मिला, और 2 इयर्स राशन वो भी फ्री में एज पर एग्रीमेंट सबको दिया गया है। और खुशी की बात यह है कि प्रधानमंत्री जल जीवन योजना के तहत यहाँ पे हर परिवार को जल कनेक्शन मिला। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री जी का जो कई सारे स्कीम है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उसका फ़ायदा भी अपने फैमिली जो यहाँ पे न्यूली सेटल हुआ है उनको भी मिलने शुरू हो गया है। तो इस तरह से कई सारे प्रोजेक्ट अभी अंडर प्रोसेसिंग में है। इस तरह से अपने सेटलमेंट यहाँ पे है। इस तरह ऑल ओवर त्रिपुरा में 12 लोकेशन पे सेटलमेंट का काम चल रहा है। This is the innovative water supply scheme under Jal Jeevan Mission, which was set up about a year ago in this Khastampada area, which is the largest settlement area of Bruriang refugees. And with this, now in multiple houses, water has been supplied directly through taps. This was a problem that the people here were struggling with for the longest time since their displacement, and now at least water is reaching their houses directly. This is the largest settlement area. There are a number of facilities that have come up ever since the peace accord, ever since the settlement agreement happened with the government of India. And we are right now present in front of an Anganwadi center. Now this center operates, this center is functional from Monday to Friday, where children are given a couple of lessons by teachers, and then they are fed a meal during the day so that they can be engaged better and their time can be utilized better, and the mothers and the parents, they send their kids here to the Anganwadi center. ये अभी हम अच्छा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा अभी आपने जो हमको सवाल किया कर रहा है कि हम आगे बढ़ेंगे, जिसकी हमारा रियांग समझ। और अभी तक तो हम लोग ऐसे चल रहा है कि और अगले आने वाला समय में तो हमारा भी पढ़ने वाला, लेखा पढ़ा वाला भी है, और हम उसी हिसाब से नौकरी भी हम लोग सरकार के द्वारा में हम लोग मांग लेंगे। हमें अनुमान न चाहो कोई ओ तेना नान सियाब न पा मैं नम चुओ कोई अब कोई थुयाहन न कोई रो न था नहीं बाके चुने। Women living here tell us that they have received tap water connections. Their kids are now able to attend school, and more facilities are coming up in their village. From years of neglect to a stable life now, they are hoping for a better future. अपने केंद्र राज्य जो भी के हैं, पहले कई सारे गवर्नमेंट आए, कई सारे गवर्नमेंट गए भी। आज तक अपने सेटलमेंट के जो इशू है, इस विषय को लेके किसी ने भी सीरियस नहीं लिया। मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके नेतृत्व में अपने माननीय गृह मंत्री जी, उनके द्वारा ये जो एग्रीमेंट संपन्न हुआ, ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, ये पूरे रियांग समाज के लिए एक क्या बोले ऐतिहासिक वह हम लोग का पल था। और मैं कह सकता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट आए, अपने सेटलमेंट को जो है कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा मैं मानता हूँ। मतलब त्रिपुरा की स्थिति और सेंट्रल गवर्नमेंट में इतने सारे जो पॉलिटिकल इश्यूज़ है, उस चीज़ को तो मेरे को इतना मालूम नहीं, लेकिन त्रिपुरा के जो इशू है
यहाँ पे कई जातियाँ रहते, बंगाली है, चाकमा है, रियांग है। ऐसी जटिल परिस्थिति में भी अपने सेटलमेंट को मतलब अच्छी तरह से मतलब कोई प्रॉब्लम्स हाँ स्मूथली जो सेटलमेंट हुआ है, यह मुझे लगता है कि केवल अपने मोदी गवर्नमेंट ही कर सकता है। और इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक पिछड़े जनजाति जो भी मतलब चाहे देश के किसी भी कोने का हो, उस प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉर्ट आउट करना चाहिए, ऐसा उन्होंने विचार मन में किया, इसलिए यह संभव हुआ है। सोच के वजह से, उनके सम्यक सोच के कारण ही यह संपन्न हुआ है। The Bodo Peace Accord, a pivotal moment in the quest for peace in Assam. For decades, demands for separate states and violence marked the struggle of the Bodos. The turning point came on January 27, 2020, when the Bodo Accord was signed, resulting in the surrender of 1,615 cadres and a substantial arsenal. This historic agreement brought an end to the 5-decade-long Bodo issue, paving the way for stability and development. वेलकम टू न्यू इंडिया जंक्शन सर। नमस्कार। सर, आप हमें बोडो पीस अकॉर्ड तक की जर्नी पहले बताइए। देखिए, बोडो समस्या को लेके 3 अकॉर्ड हो चुका है, एक 1993 में, एक 2003 में एंड लास्ट एंड फाइनल ऑन 2020। 2020 तक जो बोडो का जर्नी ऑफ स्ट्रगल ऑफ जर्नी, ये जो लंबा जो स्ट्रगल हुआ, तो उसमें एक ही वो एजेंडा था कि पॉलिटिकल राइट। जब भारत बना तब भारत का संविधान में ये सारे प्रावधान था कि हर समुदाय को अपना भाषा, संस्कृति, अपना जो कल्चर है, सबको लेके एक डिग्निटी के साथ जीने का एक हक दिया गया था। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों का ये महसूस था, ये रियलाइज़ था कि हम लोग को अपना हक नहीं मिल रहा है। हम लोग स्टेप ये जो है सेकंड सिटीजन बोल के, जैसे ही कि जो ये सेकंड स्टोर का जो नागरिक बन के जीना पड़ता है, और आम नागरिक को जो मिल रहा है हम लोग को नहीं मिल रहा है, ऐसा एक महसूस था। कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन, कहीं ना कहीं सप्रेशन, ऑपरेशन ऐसा फील कर रहे थे। तो इसके लिए 1987 से मूवमेंट हुआ, और उस मूवमेंट में काफ़ी वायलेंस भी हुआ, काफ़ी लोग मरे। तो एक फर्स्ट अकॉर्ड हुआ 93 में, उसमें हमारा एस्पिरेशन को एड्रेस नहीं किया गया। सेकेंड अकॉर्ड हुआ 2003 में, उसमें भी हम लोग को लगा कि कहीं ना कहीं हमारा एस्पिरेशंस को ठीक से एड्रेस नहीं किया गया। तो इसीलिए और भी ग्रुप्स थे जो अंडरग्राउंड मूवमेंट कर रहे थे, और मैं अंडरग्राउंड मूवमेंट में नहीं था, मैं स्टूडेंट यूनियन में था, लेकिन सेम एजेंडा को लेके हम लोग मूवमेंट कर रहे थे। तो जब देखा कि काफ़ी वायलेंस हुआ, काफ़ी लोग मरे, तो उसके बाद सबको महसूस हुआ कि कुछ करना चाहिए। और इसके लिए एक अच्छा माहौल बना जब प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। उससे पहले जब कांग्रेस के ज़माने थे, तो ये जो समस्या था उसको सुना नहीं जाता था। उसके लिए नेशनल जो लीडर्स होते थे वो लोग समय नहीं देते थे, बात नहीं करते थे। तो काफ़ी लोग एक दुख में रहते थे, अपसेट में रहते थे, लोग नाराज़ी थे। लेकिन 2014 में जब एनडीए गवर्नमेंट बना मोदी जी के नेतृत्व में, उसी टाइम में ही राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर थे। हम लोग काफ़ी बार बात किए बोडो समस्या को लेके। फिर दूसरे बार सरकार बने, उसमें अमित शाह जी होम मिनिस्टर बने, तो हम लोग का काफ़ी बात आगे तक बढ़ गए। और प्रधानमंत्री जी जब इसको एग्री किया 2020 में, जितने भी हम लोग का उग्रवादी थे जो हथियार लेके मूवमेंट कर रहे थे, और स्टूडेंट यूनियन थे, पॉलिटिकल मूवमेंट कर रहे थे डेमोक्रेटिकली, सब लोग एकजुट होके 2020 में पीस अकॉर्ड हुआ। उससे पहले
7, 8, 9, 10 में फेट्रिसाइडल किलिंग में हम लोग का काफ़ी लोग मरे। 2008 में बोडो मुस्लिम का एक संघर्ष हुआ। अगेन 2012 में संघर्ष हुआ, 2014 में हुआ। तो ये सारा चीज़ें हम लोग को बोल रहे थे कि अनटिल एंड अनलेस हम लोग को ये जो क्षेत्र है पीस करना है, शांत करना है, नहीं तो यहाँ विकास भी नहीं होगा। और हम लोग का जो एजेंडा है, हम लोग का लैंग्वेज कल्चर प्रोटेक्शन का, वो एजेंडा भी पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए हमारी समुदाय की तरफ से जितना भी संस्था, जितना भी मूवमेंट ग्रुप, सब लोग एकजुट हुआ और उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने अच्छा से समझे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का यही एक एजेंडा था कि पूरा नॉर्थ ईस्ट में पीस लाने का। तो उस एजेंडा में आके हम लोग भी कहीं ना कहीं फिट हो गया। तो 2020 में एकॉर्ड हो गया, पीस एकॉर्ड। उसमें सब लोग हथियार डाला, सब लोग घर में आया। फिर हम लोग का 27 जनवरी 2020 में एकॉर्ड हुआ। 7 फरवरी में प्रधानमंत्री जी कोकराझार में आए। आज का दिन असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए 21वीं सदी में एक नई शुरुआत, एक नए सवेरे का, एक नई प्रेरणा को वेलकम करने का अवसर है। आज का दिन संकल्प लेने का है कि विकास और विश्वास की मुख्य धारा को मजबूत करना है। अब हिंसा के अंधकार को इस धरती पर लौटने नहीं देना है। अब इस धरती पर किसी भी मां के बेटे का, किसी भी मां की बेटी का, किसी भी बहन के भाई का, किसी भी भाई की बहन का खून नहीं गिरेगा, हिंसा नहीं होगी। हमारा शिक्षा में काफ़ी बदलाव आया है। एक ही बार में इस साल में 50 हमारा जो स्टूडेंट्स है, इनको आसाम सिविल सर्विस में ये मिला कि कामयाबी मिला, उनको APSC क्लियर किया है वो लोग। बहुत सारे इंजीनियरिंग होना शुरू हुआ, डॉक्टर होना शुरू हुआ, बहुत सारे कामयाबी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और अब हम लोग पूरे भारत के लोग सोच रहे हैं, एक समय पे एक कंपटीशन जैसा था। अगर कश्मीर में कुछ हुआ है, जम्मू कश्मीर में, दूसरे दिन नॉर्थ ईस्ट में होता है, पूर्वोत्तर में, और पूर्वोत्तर में होने के बाद तीसरे दिन फिर जम्मू कश्मीर में बम फोड़ेगा, लोग मरेगा। अभी देखिए, ना जम्मू कश्मीर से न्यूज़ आता है, ना नॉर्थ ईस्ट से आता है। तो ये प्रधानमंत्री जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो काम उसने करके दिखाया, वो पहले भी अगर कोई इसके बारे में सोचे तो कर सकते थे, जिसकी वजह से हम लोग का इतना करोड़ों नुकसान हुआ ऑपरेशन के नाम पे, इतने लोगों का जान देना पड़ा। तो ये सारे चीज़ जो है प्रधानमंत्री जी ने खूब सीरियसली लिया। उसके लिए ही अभी ये परिवर्तन हम लोग को देखने को मिल रहा है। Before the peace accord of BTR in 2020, before it was in a chaos mode in our BTR region, and I think I can say that now it is a peace and harmony. We are in a BTR region. In a society also, it's a very they are also very happy. And now as the student community of the Borderland region, BTR region, we are much happy, and we are getting a very scope to work and to get an opportunity to pursue further studies and all. It's a very kind honor to say that we are in a happy mood, and it's a peace and harmony, I can say that. In my childhood, there was a cows movement. In my own experience, जब हम छोटे थे तो इतना मोमेंट चल रहा था उस टाइम, तो हम घर के अंदर दरवाज़ा बंद करके रहते थे कि कोई आ जाएगा तो कुछ करेगा। उस टाइम था, अभी ये टाइम है। देयर वाज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन दैट टाइम एंड दिस टाइम, एंड इट इज़ वेरी फॉर्चुनेट टू आस। हम अभी मतलब जो अभी सिचुएशन है, बाहर हम रात को भी निकले तो ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले हम बहुत सोचते थे कि रात को निकलेंगे तो कुछ होगा, कहीं कुछ हो जाता था उस टाइम पर, लेकिन अभी सिचुएशन बहुत नॉर्मल है। इनका प्रॉब्लम होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम।
आप 10 साल उग्रवाद में रहा, 20 साल उग्रवाद में रहा, उस टाइम में आप ना बिजनेस किया, ना कुछ नौकरी किया, ना कुछ नहीं किया, तो 20 साल के बाद वापस आके आप घर में देखेंगे तो कुछ नहीं है, क्या खाएंगे, क्या करेंगे। बीच में वो लोग शादी भी कर लेते हैं, तो बच्चे भी होते हैं, उनका फैमिली होते हैं, तो आके उनका कोई इनकम सोर्स नहीं होता है, फिर वो लोग फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं। इसीलिए हमने एक फिन रडमखांग करके एक मिशन बनाया। वो फिन रडमखांग एक मिशन का नाम है। उसमें हमने सारे जो फॉर्मर मिलिटेंट है, इनको स्किल ट्रेनिंग करना, उनके लिए कोई एंटरप्राइज खोलना, उनके कोई फार्मिंग के काम में एंगेज करना, उनको कोई अच्छा से उनके जो मन है उसको स्टडी करके वो जो काम करने का मर्जी है, दुकान देना, वो सारा में सपोर्ट करने का काम हम जो है ये फिन रडमखांग से हम लोग शुरू किए हैं, ताकि उनको तकलीफ ना हो। और उनके एक घर बनाना है अच्छा, तो उसको PMOI के घर और उस कुछ पैसा लगा के अच्छा एक घर बना के देना है। उनका फैमिली में कोई बीमार है, उसको थोड़ा सा फिनेंशियल सपोर्ट करना है ट्रीटमेंट के लिए। ये सारा काम हम काउंसिल गवर्नमेंट से कर रहे हैं, ताकि उन लोग ये महसूस ना हो कि समाज हम लोग को नकार दिया है, हम लोग को छोड़ दिया है, ऐसा उनका महसूस ना हो। इसके लिए हम लोग हर मुमकिन कोशिश हम लोग कर रहे हैं। So we are in Sikaridanga right now, which is located in Majbat in Assam, and it is very close to Arunachal Pradesh. Like you can see behind me, this is Arunachal Pradesh and we are in Assam. And I have someone very interesting with me right now. Thank you very much. My name is Binwal Wari. Formerly, I was serving NDB as the Joint Secretary up to the 2020. And finally, on 27 January 2020, there was a peace accord between the government of India and NDB and APSU and some reputed organization from the Bodo communities. Thereafter, after that agreement, actually we have to surrender our old arms, and ceremonially on March, I think, I forgot the exact date, but we have to lay down our arms. Thereafter, that this organization as NDFB, it was disbanded. Thereafter, our people, those who were cadres of NDB, some of them are engaged in some specific activities like livestock farming, like agricultural farming, and many are engaged in the just like small trade and business. So in this way, here we are also doing ginger cultivation here, and approximately somewhat like 100 bighas here in the Sikaridanga. We have been cultivating the ginger. So you can see right now here where we are sitting. This is also a vast field where we have already planted the ginger. मिशन फिन रडमखांग, तो ये मिशन जो है इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ BTR मतलब प्रमोद बोरो सर ने लॉन्च किया था ताकि जो फॉर्मर कैडर्स ऑफ NDB और जो आंदोलन से इफेक्ट हुआ जो फैमिलीज लोग हैं, उनका परिवार और वो लोग ताकि कुछ कर सके, कुछ मतलब खुद को इंगेज कर सके। तो इस मकसद से जो मिशन लॉन्च किया गया है, उसके द्वारा अभी कम से कम हम लोग 19 कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, और अभी 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी फिर ऑन पार्किंग में है, मतलब रजिस्टर होने वाला है। तो कुल मिला के हम लोग का 21 कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी होंगे। उसके अलावा भी हम लोग का बोला गया है कि हम लोग 30 कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना है अब तो गहपुर तक। तो ये 19 तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में फिलहाल अब तक मतलब 7 कोऑपरेटिव सोसाइटी 7 कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट ऑफ BTR के द्वारा मतलब कुछ फंड दिया गया है। उससे 40-40 लाख का आपका डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइस कोऑपरेटिव सोसाइटी और मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, अभी कुल मिला के 60 कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट ऑफ BTC से फंड दिया गया है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कुल मिला के सभी को मिला के कम से कम अभी मतलब 3000 से ज्यादा लड़के या कुछ माने महिलाएं भी है उसमें, हम लोग उसको बना चुका है और इसमें अभी काम कर रहे हैं।
हम लोग उम्मीद करते हैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा हम लोग बहुत कुछ ऐसे प्रोडक्शन कर सकेंगे और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो प्रोडक्ट मैंने प्रोड्यूस करेगा उसको एक ब्रांड दिया जाएगा। उसका ब्रांड का नाम है रेडम। तो वो रेडम के अंदर में आपका जो भी मिल्क प्रोड्यूस होगा या राइस पैकेजिंग होंगे या मैंने कुछ भी हो ऐसे मैंने प्रोसेसिंग हम लोग कर सकेंगे बाद में, उसका रेडम ब्रांड के अंडर में ये आ जाएगा। ये बहुत अच्छा एक मैंने प्लान है। शायद आने वाले दिनों में इधर बिटिया रीजन में इनके द्वारा ये मिशन के द्वारा बहुत लोग सेल्फ एम्प्लॉय हो सकेंगे, आत्मनिर्भर बन सकेंगे। हाँ हाँ हाँ, इसके क्या बोलते हैं वही सेल्फ रिलायंस ये हो सकेगा। हम उम्मीद करते होंगे ये, और ये बीटीसी बिटिया गवर्नमेंट का बहुत अच्छा एक मैंने मिशन है। ड्यूरिंग दिस सम कपल ऑफ इयर्स बैक we have noticed many changes in the government itself, in the living standard, in the whole system of the countries, I can say. Because last couple of years back, there were no what is called, this is smart card, like smart card, and in the field of transaction, what is called that one, like phone pay, this and that, digital, right, yeah. right, digital, yeah, like a digital transaction, such types of, in official level also lots of changes has come. So I think if you see the external world, all the countries are developing. In comparison to them, India is also developing. So in this era, if we are unable to adjust ourselves and residing in this region, this area, if this area is disturbed again, I think the development will not take place, and we'll be not able to adjust ourselves in these developing countries. Now, what I mean to say is that, yes, this time our people are getting lots of scopes, and you have to adjust yourself, and you have to search for the scopes, and you should adapt yourself to adjust with the situation. So I think our people has to adjust with the ongoing atmosphere. मेन बात ये है कि पीस को सस्टेन करने के लिए सबको काम करना होगा। अभी तक जो पीस एग्रीमेंट किया है काफ़ी संस्था ने, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने, काफ़ी मूवमेंट ग्रुप ने, ये इट इज़ लाइक ओपनिंग द डोर फॉर पीस। नाउ आवर ड्यूटी इज़ टू मेक पीपल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस। तो इसीलिए जो पीस के बारे में हम लोग, आप और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, जो पीस पॉलिटिशियन लोग बात कर रहे हैं, वो पीस ऐसे ही नहीं आएंगे। अभी पीस आया है, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, होल ऑफ द टाइम, कि इतना साल वायलेंस हो गया और कंटिन्यू होगा, तो सब लोग फेडअप हो गया कि यहाँ कितना वायलेंस होंगे। और इसके साथ ही एक अच्छा लीडर मिल गया, मोदी जी, उसने उसमें काम करना शुरू किया। भैया ये सब छोड़ दो, अच्छे रास्ते पे आ जाओ, ये फंड ले लो, पैसा ले लो, काम करो, डेवलपमेंट करो, स्पोर्ट्स में आ जाओ, कल्चर में आ जाओ, सब रास्ता खुल लिया। तो इसीलिए थोड़ा हम लोग आ गए। From the government side, it is also very much they have done genuine things for the people, for the development, for the upliftment. Because you can see here in our area, Bodoland area, lots of youth power, they were already misguided. Yes. Some of them were misguided because they have very much potential within themselves. Some of them were very much learned, even though they didn't get any scopes for exploring their knowledge, this and that. Finally, what to do? Sometimes the situation comes like that. So it is okay now. We are very much happy. We have already left such what is called violent activities. Now, actually, my opinion is that now I never wants to go that way again. And I, for my young generation and for our coming generation, I will suggest them, you do good jobs. Now lots of scopes are there. I must thank our Honorable Prime Minister of India, because he's such a guy. We have been witnessed such type of Prime Minister. We have some emotional connection, I feel like that, because
After the 2020 agreement, he has visited to Kokrajhar also, and I with my people, our people, we were there to listen him. Our heart actually connected with him. जितने भी यंग जनरेशन्स के लड़के वो लोग सामने आके एंटरप्रेन्योरशिप में ध्यान दे रहे हैं, तो कोई कुछ अपने तरफ से कर रहा है, तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है अभी. सो मतलब विलिंगली यंगस्टर्स आके अपना काम करने को मतलब मौका मिल रहा है उन लोगों को. कैसा लगता है? कोकराझार में कुछ करना चाहोगे? व्हाट इज योर हाँ मतलब सोचा तो बहुत बड़ा है. अभी जो नया जनरेशन है वो अभी डिजिटल इंडिया जो हो रहा है, मतलब आजकल तो मतलब जो भी सीखना है मतलब यूट्यूब वगैरह से सब कुछ सीखने को मिल जाता है. अगर कुछ ट्रेनिंग भी मैंने मतलब 3 साल से सीख रहा हूँ, मतलब अभी तक इतना सक्सेस नहीं मिला है, फिर भी सीख रहा हूँ वो यूट्यूब. जब हम कुछ साल पहले देखते थे तो नॉर्थ ईस्ट एकदम नेग्लेक्टेड रहता था, नॉर्थ ईस्ट को उतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अभी नॉर्थ ईस्ट को जो फोकस मिलना चाहिए, जो मतलब प्रायोरिटी मिलना चाहिए, अभी मिल रहा है. तो इससे क्या होता है कि हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी जुड़ रहे हैं. मेन स्ट्रीम जितना भी सीनारियो हो उसमें हम नॉर्थ ईस्ट विलिंगली पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं. तो और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन एस्पायरेशंस ऑफ यंगस्टर्स, टुडेज जनरेशंस. सो अगर ये सब अगर हम करेंगे, अभी के यंगस्टर्स को अगर हम प्रायोरिटी देंगे, तो ऑफ कोर्स फ्यूचर में भी हमारा पॉलिटिकल जो सीनरी है वो बहुत अच्छा होगा. If you produce, they come here. You know that. When you produce somewhere, they are going. The माने व्यापारी वो लोग जा सकते हैं, कहीं भी हो वो लोग जा सकते हैं कि रास्ता अच्छा है, रोड कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, जहाँ भी आप जाइए. तो अभी मतलब आपका जो डिस्टेंस है वो कम हो गया है? बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है, आराम से करते हैं. हाँ, बहुत अच्छा हुआ है. ये सब तो अभी सोचने की बात है ही नहीं, बहुत ये सब डेवलप हो गया है. मैं तो बीटी से ये हम लोग का बीटीआर रीजन में तो सारे से सारा मैंने गांव में अभी रास्ता बन रहा है. डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन. Our trip to various parts of the BTR region in Assam proved one thing, that like many others, the Bodo Peace Accord has come as a boon for the people living here. The former militants who laid down their arms are now involved in developmental missions aimed at prosperity and harmony. Since 2014, approximately 10,000 insurgents have surrendered, leading to a 76% reduction in extremist incidents and a staggering 97% reduction in civilian fatalities. The settlement of border disputes and peace accords has not only improved security but also led to a reduction in the imposition of the Armed Forces Special Powers Act or AFSPA. Assam, Manipur, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura and Meghalaya have witnessed varying degrees of AFSPA reduction, reflecting the changing dynamics of the region. The landscape of northeast India has undergone a paradigm shift since 2014. The region has witnessed a remarkable transformation. From the shadows of insurgency to the corridors of development, the journey has been nothing short of extraordinary. But the transformation goes beyond security. Since 2014, over 4.33 lakh crore rupees have been invested in the Northeast. Connectivity remains a cornerstone of development in this region. Rail and road projects, coupled with efforts to expand air and waterway connectivity, are bridging the gap between the region and the rest of the country. Once neglected, the region has now become a focal point of development initiatives. The Northeast is fast emerging as the economic hub of India, thanks to initiatives like the Act East policy. This policy, launched in 2014, aims to promote economic cooperation and cultural ties with countries in the Asia-Pacific region, enhancing connectivity and opening new avenues for trade and investment. The Modi government has allocated unprecedented resources for the development of the Northeast. Budgetary support has increased by 186% for infrastructure projects with a focus on filling developmental gaps and improving basic services. As we reflect on this transformative journey, it is evident that the peace accords and developmental initiatives have not only silenced the guns of insurgency, but have also laid the foundation for a prosperous and harmonious Northeast. The vision of Prime Minister Narendra Modi, coupled with the resilience of the people and the dedication of the security forces, has indeed
turned the Northeast from a troubled region to a beacon of hope and progress.